Hello, everyone, and welcome back to Life Tools, the platform for art, culture, music, health, and science. Today is going to be art, and in art, we are going to brush our shoulders with portraiture and watercolor. Well, वो दोस्त जो watercolor और portraiture सीखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे टिप्स आज मिलने वाले हैं। तो लेकिन सबसे पहली बड़ी चीज़ ये है, इट इज़ डीम्ड कि आप ड्राइंग करते हैं, आपने ड्राइंग की है, यू नो अबाउट पोर्ट्रेट्स, आपने पेंसिल से काम किया है, आपने स्केचेस बनाए हैं, आपने अच्छा सा काम किया है पोर्ट्रेचर पे, लाइक यू नो हाउ टू ड्रॉ अ नोज, हाउ टू ड्रॉ लिप्स, हाउ टू ड्रॉ आइज, हाउ टू ड्रॉ ईयर्स, हेयर वगैरह, ये सारा कुछ एंड एवरीथिंग अबाउट आइज, मतलब आईलिड्स कैसे बनाए जाते हैं, ब्रोज कैसी बनाई जाते हैं, देन आई के ऊपर जो आईलिड है उस पर क्रीज कैसे बनाई जाती है, देन आई लैशेस कहाँ से निकलते हैं, ये सारी चीज़ें आई डीम कि आपको ये सारा इल्म है। और अगर नहीं भी है तो यू कैन स्टार्ट इन दीज डेज ओनली। हो सकता है आई प्रोवाइड यू सम more information about sketching and watercolor itself. लेकिन इससे पहले कि हम watercolor की बात करें, ये मैं मुनासिब समझता हूँ आपको बोलना कि आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, provided you have that spark, या वो जो चिंगारी बोलते हैं, आपके मन में, आपके दिल में वो चिंगारी या स्पार्क जो है होनी चाहिए। वही बात है कि आपकी इंक्लिनेशन होनी चाहिए, तब आप कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप 20 के हों, 30 के हों, 40 के हों, इवन 50 साल के भी होंगे, 60 साल के भी होंगे, तब भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव एन इंक्लिनेशन एंड यू हैव दैट स्पार्क इन योर हार्ट। तो आप ये कभी भी मत सोचिए कि वो बंदा ये काम कर रहा है पिछले पता नहीं कितने साल से, यार वो तो मुझसे 7 स्टेप आगे है, मैं तो उससे हमेशा पीछे रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आप का कंपेयर आपके गुजरे कल के साथ कीजिए कि आपका आज का कल से बेहतर है या नहीं है। और यकीन माने, अगर आप में डेडिकेशन है, फोकस है, कमिटमेंट है और थोड़ी सी गाइडेंस आपको मिले, आपके दाएं बाएं जितने भी लोग हैं जो ये काम करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट वर्क हो, कैलीग्राफी हो, कोई भी चीज़ हो, आप उनसे बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। बस आपका फोकस होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, नहीं मैंने ये करना है तो करना है, एंड विद राइट गाइडेंस। अब गाइडेंस की बात जहाँ आती है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हालांकि आपको ये पता चल भी सकता है, अगर आप हिट एंड ट्रायल में आप बैठेंगे तो कभी ना कभी तो आपको पता ही चलेगा व्हाट ब्रशेस टू यूज़, विच कलर्स टू यूज़, क्या टेक्निक है, वेट ऑन वेट क्या होता है, ड्राई ऑन वेट क्या होता है, या वेट ऑन ड्राई क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलनी है अगर आपकी इंटरेस्ट होगी। लेकिन अगर आप कहीं से गाइडेंस हासिल करते हैं, या मैं जो आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, आपका जो सफ़र है बहुत आसान हो जाएगा और आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं जी कोई बेस्ट पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देयर आर मैनी पीपल हु ड्रॉ मच बेटर देन मी, बट देन बात आती है वही अपने डेडिकेशन की और अपनी कमिटमेंट की। आजकल जो एक फाइन आर्ट है कि आपने पोर्ट्रेट देखा और दिल खुश हो गया, और आदमी जो देखता है उसके मुंह से वाह वाह निकल गया। और अगर आप ऐसा पोर्ट्रेट वॉल पे टांगते हैं, हैंग करते हैं, तो जो कोई भी आपके घर में आएगा तो पहली नज़र उसको उस पोर्ट्रेट पे पड़नी चाहिए। सो एक रेफरेंस पिक्चर लेंगे, उस पिक्चर को लेके हम डिफरेंट लेयर्स क्रिएट करेंगे और उस पोर्ट्रेट को
पाए तकमील तक ले जाएंगे। और इस सिलसिले में एज एन व्हेन आई विल बी शूटिंग, तो ये सारा जो वीडियो होगा मोस्टली टाइम लैप्स में होगा, 80-90% टाइम लैप्स में होगा, लेकिन वो जो 5-10% या 15 या 20% होगा उसमें वो रियल टाइम में होगा, और उसमें मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा या कुछ हेल्पफुल हिंट्स दूंगा या टिप्स दूंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके पोर्ट्रेचर के सफ़र में। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ब्रशेस कौन से लग सकते हैं या पेंट्स कौन से लग सकते हैं। तो सरसरी में इस वक्त थोड़ा सा बोलूँगा क्योंकि वाटर कलर जो है ये क्यों कहा जाता है वाटर कलर, बिकॉज द मीडियम इज एज सच कि इसमें डोमिनेंट जो है पानी ही है, वाटर है। तो 80-90% जो है पानी ही इस्तेमाल होता है। तो पिगमेंट जो है, कलर जो है वो 10-15% यूज होता है, अनलेस यू आर इन द लेटेस्ट स्टेज, फाइनल स्टेज में अगर आप हैं किसी लैंडस्केप के या पोर्ट्रेट के, तो उसमें थोड़े से थिक पेस्ट्स हम बनाते हैं, हल्के से, उतना भी ज़्यादा नहीं। तो कलर की बात करें, जो बजट में कलर आते हैं, ब्रेस्टो कलर जो है वाटर कलर, इट्स इन बजट, पॉकेट फ्रेंडली है। देन वी हैव विंसन एंड न्यूटन, तो ये उससे एक स्टेप आगे है। उसके बाद मीजेलो आते हैं, वो ट्यूब्स में भी आते हैं और पैंस में भी आते हैं, जैसे विंसन एंड न्यूटन जो है वो भी ट्यूब्स में आते हैं और पैंस में भी आते हैं। मतलब छोटे छोटे जो गोटियाँ जैसी होती हैं, चकोर खाने जैसे होते हैं वैसे। इट डजंट मीन कि जो बॉक्सेस में आते हैं, ये केक्स में आते हैं, दोज आर इंफीरियर कलर्स, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ऑफ द सेम क्वालिटी जो ट्यूब में है। उसके बाद आती है एक बहुत ही फाइनर क्वालिटी, दैट इज डेनियल स्मिथ। डेनियल स्मिथ के जो कलर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन कलर हैं, और उसमें ज़बरदस्त वाइब्रेंट कलर आते हैं, और जब ट्रांसपेरेंसीज आप क्रिएट करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है काम करने में। पिक्चर को आप गौर से देखिए, ये फ़ोन में पिक्चर है। दिस वी विल कीप एज रेफरेंस पिक्चर। आई विल कॉल हर एमिलिया, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम, दिस गर्ल एज एमिलिया, एंड इसी पे हम काम करेंगे, डिफरेंट लेयर्स क्रिएट करेंगे ऑन बोर्ड, और ये हम पेपर चढ़ाएंगे। इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक वाटर कलर पेपर। सो लेट्स डाइव इनटू action and start learning things. Welcome everyone. तो आई एम थ्रू विद माई रफ स्केच, और अब मैंने ये इरेजर ले लिया टू रिमूव एक्स्ट्रा ग्रेफाइट या कार्बन जो है स्केचिंग पे पड़ा हुआ। आई विल डैब इट ऑन द स्केच। आप देख रहे हैं ये जो इरेजर है, ये एक्स्ट्रा जो लगा होता है, ये कार्बन या ग्रेफाइट जो लगा होता है, इसको ये उठाता है। वी जस्ट हैव टू डैब इट। और ये एक खास किस्म का इरेजर होता है। इट्स नीडेबल एंड मेलेबल। आप इसको किसी शेप में भी डाल सकते हैं, और इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, ये मिलता है आराम से। यू जस्ट नीड टू सर्च, दैट्स ऑल। आप देख लीजिए, ये नया इरेजर था, इस पे ये लेयर आ गई कार्बन की, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू लिफ्ट ऑफ जो भी एक्स्ट्रा इसमें ग्रेफाइट लगा हुआ है। और ये ग्रेफाइट उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हम पिगमेंट या कलर की लेयर लगाएंगे, ये उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है, और खामखा मतलब जो कलर का अपना जो वैल्यू होता है उसमें ये चेंज आती है। और आप ये देख सकते हैं, देखिए ये कार्बन कैसे इस पे इरेजर पे जमा हो गया। सो यू शुड ट्राई एंड फाइंड वन। एक दो ये पैकेट में आते हैं,
तो इतने महंगे भी नहीं होते हैं, तो बट देन शौक की बात है, अगर आपका शौक है तो यू मस्ट गेट इट। सो दिस इज़ अ रेफरेंस पिक्चर जो मैंने फ़ोन से निकाली, और सारे टाइम मैं इसको देख के लेयर्स क्रिएट करूँगा पेपर पे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल इसी के साथ जाएंगे, कुछ और भी हम अपने रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने मिक्सिंग पैलेट लाया और मैंने और यहाँ जो पहली लेयर जो हमारी बन रही है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ येलो ओकर एंड रोज़ मैडर। तो पानी इसमें काफ़ी जाएगा। ये एक देखिए, ये एक स्प्रे बॉटल है मेरी, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है, इसमें पानी रहता है तो इजीली हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वी कैन मिक्स द कलर्स। Well, first of all, what we will try is apply the shade on a small piece of watercolor paper, just to check कि ये पेपर पे कैसे आ रही है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ये शेड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। एंड एज आई सेड अर्लियर, पहली लेयर जो है इट हैज़ टू बी एक्सट्रीमली थिन, और इसका वैल्यू जो है बहुत ही कम होना चाहिए। इट हैज़ टू बी वाटरी लेयर। और सबसे पहले जहाँ जहाँ हम ये अप्लाई करेंगे वहाँ हम पानी पहले पानी का वॉश लगाएंगे होमोजेनसली। उससे क्या होता है कि जहाँ भी हम ये पेंट लगाएंगे पहली लेयर, तो वाटर कलर का अपना भी एक प्रॉपर्टी है कि ये फैल जाता है आराम से। जहाँ जहाँ पानी है यहाँ उधर अपना रास्ता बना लेता है। So it will spread homogeneously, and this is our first layer. और यहाँ हम इंश्योर करेंगे कि हमारी पहली लेयर जो है वो आँखों पे नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आँखों में जो वाइटनेस है फिर वो नहीं बन पाएगी। एंड यू हैव टू हैव 2 jars ऑफ वाटर। एक में आप ब्रश साफ कर सकते हैं और एक से आप एक मतलब नया पानी ले सकते हैं। अब फेस पे तो हमने पहला वॉश लगा दिया कलर का, और फर्दर हम फेस पे तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू गेन सम टाइम हम क्या करेंगे, जो एमिलिया की जो शर्ट है इस पे हम पहला बेसिक एक वॉश लगाएंगे। वो भी वेट ही रहेगा, और जब वो सूखेगा उसके बाद हम जो कुछ ये फ्लावर्स वगैरह जो फ्लोरल डिज़ाइंस बने हैं शर्ट पे, वो उसके बाद बनाएंगे। बट ऑफ कोर्स इन सेकंड सिटिंग, क्योंकि सेकंड सिटिंग तक हमको इंश्योर करना है कि फेस पे जो पहला वॉश है और जो शर्ट पे जो हम पहला वॉश कर रहे हैं, और ये हम यूज़ कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा पर्पल और थोड़ा सा रोज़ मैडर मिला के, और ये वॉश अप्लाई करेंगे। और वंस अगेन इसमें भी हम पहले पानी का एक वॉश लगाएंगे। देखिए मैं पानी को अप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट द कलर वॉश
which is applied after this has even this spread. ये evenly फैल जाता है, अपना रास्ता बना लेता है और स्मूथ हो जाता है ये. For the second wash, sitting for the second wash now, and I have to ensure that my hands are clean. There is no oil on my hands, no dirt, nothing. It's better always to wash our hands. Now for the second wash, I'll be going in for the face area, only face and the neck area. I'll be leaving hair and the shirt for third or fourth wash. So once again, we'll be concentrating on face only, no lips, no eyes, no brows, only face part of it. So let's see the photograph once again and see what can we do. Create a color, some pigment very close to this value, darker value here, and apply that. And of course, keep a track of the color palette we are creating now. We so far used two shades rather. One is yellow ochre plus rose madder, and the second one is purple plus rose madder. These are the two shades we used. And it's always better that you keep a record while making the portrait, because if you want to go back to the shade, you can create it if you have the record. If you don't have any record, then you cannot create it, just in case if you are short of the color while doing, or if you want to do some touching and all that, this is for that. Well, for experts, this may not be that necessary, because when they keep on working and working and working, they know everything what they are doing and how to create and recreate shades. Well, that's it. Let's bring on the third shade for the face, the second wash. तो क्या होता है कि कभी-कभी आपके कलर जो आपका कोई ब्रांड का होता है, तो कोई ख़ास एक कलर आपको नहीं मिलता है, तो आप फिर सहारा लेते हैं किसी और ब्रांड में से कोई एक ख़ास शेड निकालने की. तो लाइकवाइज आई टुक हेल्प ऑफ विंसर एंड न्यूटन स्मॉल पैनकेक्स. तो इसमें से मैंने थोड़ी सी शेड ले ली, एंड आई एम वर्किंग ऑन द फेस नाउ. और यहाँ हम बालों के लिए बर्न सनाई लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम डॉक्टर मार्टिन के लिक्विड कलर्स में से रेड ऑक्साइड कलर लेंगे, हल्का सा एक ड्रॉप, उसको इसके साथ मिला के, एंड वी विल मिक्स इट वेल, बट इंश्योर कि ये ज़्यादा एनरिच्ड कलर नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट ही वॉश रहना चाहिए. जो भी स्ट्रैंड्स हम बनाएं, ये ट्रांसपेरेंट ही रहना चाहिए. So here we are with the next sitting, and as I said, first of all, we have to make sure our hands are clean, and the best thing is to wash our hands so that we get rid of the oil secretions which everyone gets. If these oils get stuck to some places on your portrait or on your painting, then it's difficult to apply a fresh layer of paint on that, and it can be visible. It can be visible that there's something wrong with that patch of paper or that area where you are working. So coming back, this is the color palette we have used so far in this portrait, and we are going to do one more layer
on the face and the neck, and you can see there is no particular shape in the portrait as yet. We have to work it out, and the next layer has to be darker in value than the shades applied here. The pigment to be applied here has to be darker. We won't be touching the lips part of it, eyes. We will only create a layer of shade which is darker, a bit darker, and we won't be going into fine details of the portrait as yet. And to save time, after finishing up with face and our neck, we'll be going in for this shirt, and in shirt also we will go only for one type of flower, maybe pink or a purple, so that we don't mess with the color. If we go in for some other type of pigment, it can interfere, and the best thing is to leave it for the second or the next sitting. So let's do the job, and for next value, my value of the shade has to be darker than this, and I have to create that, and let's see how I can do it. So once again we are taking burnt sienna and yellow ochre and mix it well, but we have to ensure that the color is not pasty. It's not in the form of paste. It has to be watery. So now that we have done wash on the head and we have time, and since we don't have to go upwards, we can do some work on the shirt, and we can draw these flowers, and this can save us time. Well, this is the overnight work. It's all dry. We have to today do some feature work of the face, bringing out the features of the face, and for that I'll be using these fine liner brushes, which are very thin, and in certain respects maybe the hair is not visible. It's very, very thin, and we have to make sure that the shade we are using right now, the pigment used in those shades is very less, so that even if there is some mishap, we can rectify it. So let's mix the paint well and start applying on the delicate places, the eyes, the lashes, eyebrows, and the wash has to be very, very thin, and it will be applied on already layered wash, and it will intensify the value of the
elements there. We do nostrils, we do the inside of nostrils and all creases around. And just a little tip, while mixing the colors in the mixing palette, well, we have different kinds of mixing palettes. These pans are having slopes. So it's always better that you keep the pigment here and put some water here, so that you keep on taking the pigment from here and mix it with water according to the value you want to put it on the paper. So it will always flow down. Gravity will take its own course. And now this is the most sensitive part of portrait making. यहाँ हम आँखों पे काम करेंगे. We will lay a rich layer of pigment on eyes, brows, and very carefully we have to lift pigment very delicately. The brush has to be a liner brush with a small tip and sharp tip. 0 number brushes, these are available, and sometimes if you see it from a distance we feel कि इसमें हेयर है ही नहीं. तो इस किस्म के ब्रश हैं ये. आपको आँखों पे काम करना है, आँखों की क्रीज पे काम करना है, eyelids पे काम करना है, where you have to show
आई लैशेस, देन आई क्रीज पे काम करना है, देन यू हैव टू डू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स में जहाँ लाइट अंदर नहीं दिखती है तो वहाँ हमें छोटा सा एक सुराग दिखता है, इट इज जस्ट बिकॉज लाइट वहाँ अंदर नहीं जा रही है। देन यू हैव टू डू द सेपरेशन लाइन ऑफ लिप्स। लिप्स में आपको एक सेपरेशन लाइन देनी है, कितना खुला हुआ है, लिप्स कितने खुले हुए हैं या मुंह कितना खुला हुआ है एज पर द रेफरेंस पिक्चर, तो उस हिसाब से आपको जाना है। तो वी हैव टू टेक अटमोस्ट केयर इस मरहले में, जो इस वक्त पोर्ट्रेट में हम काम कर रहे हैं, तो इसमें वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पिगमेंट या कलर ज़्यादा पड़ गया, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक इट ऑफ एंड ये सारा पोर्ट्रेट वैसे ही ज़ाया हो जाएगा। एंड नाउ ऑन टू लिप्स। लिप्स में हम कोशिश करेंगे लिप का कलर देने की। इसमें लाइट पिंकिश कलर होता है और कभी कभी किसी का थोड़ा रेडिश पिंक होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि लाइट कहाँ से आ रही है, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। तो एज इट इज़ ये जो हमारी रेफरेंस पिक्चर है, यू कैन सी कि इसमें लाइट जो है टॉप राइट से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट के जो एमिलिया का राइट है, टॉप राइट, वहाँ से लाइट आ रही है। तो इट विल क्रिएट शैडोज अंडर हर लोअर लिप, और नेक पे भी थोड़ा शैडो आ जाएगा और अपर लिप के नीचे साइड से भी शैडो आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि वहाँ हमको पिगमेंट थोड़ा सा रिच करना है, वेदर इट इज़ पिंकिश और रेडिश पिंक। तो इस तरीके से लिप्स जो हैं हाईलाइट हो जाएंगे। एंड नाउ फॉर हेयर आई विल बी यूजिंग माय रिगर ब्रशेस। रिगर ब्रशेस में ज़बरदस्त एक कंट्रोल होता है। एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या पेंट होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, एंड ये स्टेडीली बहुत ही आराम से हमारे पेपर पे पेंट डालता है। एंड यू कैन कंट्रोल इट, इवन दो ये जो वाटर कलर है ये उतना ओबीडियंट मीडियम नहीं है, ये कभी कभी आपकी कंट्रोल से बाहर भी जाता है। बट देन द टेक्निक इज व्हाट यू हैव टू लर्न। हमें टेक्निक सीखनी है कि ब्रश में कितना पेंट आना चाहिए और हमें कितना अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन ये रिगर ब्रशेस जो हैं या व्हाट यू कैन कॉल लॉन्ग हेयर ब्रशेस, ये काफ़ी सारे मिलते हैं, बहुत ही कंपनीज के मिलते हैं। कुछ काफ़ी अच्छे हैं, कुछ ऐसे ही मतलब एवरेज क्वालिटी के हैं। बट देन इफ यू हैव टू बाय, यू बाय समवट बेटर, अच्छी क्वालिटी की। सो वी हैव कम डाउन टू दिस प्लेस। अब हमने ये हम कर रहे हैं, ये बाल वगैरह बनाए, एंड देन वी आर गिविंग फाइनल टचेस टू आई लैशेस, ब्रोज, जो डार्क वैल्यू के कंपोनेंट्स हैं इसमें पोर्ट्रेट में, ताकि हम फीचर्स जो हैं एनहांस करें। तो उसमें आई लैशेस भी आती हैं और बाकी सारे जो चीज़ें हैं जो हमें कंपेयर करना है विद आ रेफरेंस पिक, तो उसी को देख देख के हमें आगे चलना है। और साथ में चेक करते भी रहना है कि हमारी शेड जो है वो कहीं ज़्यादा डार्क तो नहीं बन गई है, कहीं पैचेस तो नहीं बन रहे हैं, कहीं पेंट ज़्यादा तो नहीं पेपर पे आ रहा है। दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ। और यहाँ जो है हमको हेयर को जो है रियल लुक देनी है। तो हेयर स्ट्रैंड्स जो हैं उनको हमने ऊपर से लाना है और एक लचक के साथ लाना है। छोटे छोटे हेयर स्ट्रैंड्स बनाने हैं। बाहर वाइट पेपर पे भी कुछ स्प्लैश करने हैं ये हेयर स्ट्रैंड्स। और जो हमने पहला वॉश दिया था हेयर के लिए, एक लाइट वॉश, तो उससे एक डायमेंशन क्रिएट होता है कि ये हेयर स्ट्रैंड्स हैं। Well, as it is, I am done. But then
after a few hours or maybe tomorrow, I'll be having a quick look on the portrait, because when you keep on moving your brush and painting, you get emotionally involved and you think whatever I am doing is absolutely okay, everything is okay. But at times you are not able to see through the mistakes you have committed. So it's always better that you review it next day for a final assessment. If there are any mistakes or anything, any hard edges somewhere where you don't want to have hard edges, so that you can rectify it. As it is, if I want to leave it right now, it's okay, but then I would like to have a final look. Hello everyone and welcome back from the watercolor drawing board. And for those of you who completed this journey of watching this video or this portrait entirely, must be thankful to the technology, in particular to time lapse. Well, as far as I'm concerned, I completed this job say around in 7 days, at times having a few sittings in a day. Well, it's time we see the result, and the result is here. This is Emelia, and I'm sure you must have got some handy tips how to do watercolor, and it's time for you to begin the journey. But don't forget to subscribe to this channel, Life Tools. So have a wonderful time.